Good morning, everyone. I hope you guys can hear me. Good morning, everyone. Sorry, guys, I was a bit late because I was facing some technical issues. So please write yes in the chat if I'm audible and visible to you guys. Great, great. Thanks for the confirmation, guys. Shivangi, I've just added you to the stage. Uh, Great. So Shivangi ma'am is here. So Shivangi ma'am, let me know when we are good to go. Yes, absolutely. Hi, good morning, Avinash. We are good to go. We can just start begin. Great. Over to you then. All right. Um, कल के सेशन में हमने देखा कि काफी एक बहुत ही टाइट रेंज में वॉलेटाइल मूव था तो हम कोई ट्रेड नहीं ले पाए थे बट ऑफ कोर्स इफ देयर इज एनी ट्रेड सेटअप टुडे वील ऑब्वियसली डिस्कस इट आज थोड़े बहुत इंडाइसेस के बारे में बात करते हैं देन वील ट्राई टू टेक अप a lot of stock queries as well, right? तो मैं quickly अपना share screen कर देती हूँ. Yes, absolutely. All right, very good morning, everyone. Welcome to the last morning session of the week. Weekend आ रहा है and सब अपने अपने family के साथ काफी सारे time spend करना. Don't forget कि काम होता रहेगा, but वो भी काफी important है. Right. Okay. So we've seen that Nifty has opened kind of positive above 25,500, but वहाँ पे एक थोड़ा सा कॉल राइटर्स का जोन जो है वो एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है, यानी कि अपसाइड थोड़ा कैप हो सकता है for the day. But the good part is we are witnessing good buying interest from the lower zones. और अच्छी बात ये भी है कि हम पिछले दिन के लो को रिस्पेक्ट करते हुए भी दिख रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये 25,450 यानी कि 25,450 will be a make or break zone here. If it manages to hold above this, तब हम buying stance में बिल्कुल जा सकते हैं. और if it fails to hold, then we might see some consolidation for the day. But like we saw yesterday, कि larger time frame chart जो है निफ्टी का वो positive हो रखा है. तो अगर इंट्रा आवर या 15 मिनट्स कैंडल में हम थोड़े बहुत डिप्स देख भी रहे हैं बट उसमें पुट में एक्शन जो है वो इतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है. So that is the reason why we are not being able to go for put buying also, because markets at lifetime high level zones पे है और overall positive view intact है broader structure का. इसलिए हम positionally अगर कोई बात कर रहे हैं तो हम buy on decline की जो strategy है वो ही apply करेंगे. Next, we are expecting the recent lifetime high, which is of course 25,600 zones, और उसके बाद 25,750 के levels भी हमें देखने को मिलेंगे. 25,350 would be an important support which will act as a base here at these levels. So this is the view for index Nifty. Quickly हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, उसके बाद सेंसेक्स की भी बात करेंगे. आज फ्राइडे है इसलिए तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो लगातार हम इसमें आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से. ये बहुत ही सडन आउट परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिला है. ऐसा लग रहा है प्राइवेट हैवी वेट बैंकिंग काउंटर्स जो है वो अब काफी दिनों के बाद जगे है एंड their hibernation is over now. So we are witnessing follow up काफी strong है यहाँ पे. कल के सेशन में हमने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई लेवल्स टच किया था, कुछ पॉइंट्स के ही दूर पे हम थे. तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव है व्यू बैंक निफ्टी में एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छी खासी मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इसका लाइफ टाइम हाई लेवल गाइस आप अगर चेक करोगे तो 357 है, 53,357, और कल हमने 53,353 टच किया है, यानी कि जस्ट 4 पॉइंट दूर थे हम लाइफ टाइम हाई लेवल्स के. तो ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होगा, ये जो आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में है वो कंटिन्यू होगा. स्पेशली फोकस ऑन हैवी वेट प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स. क्यों प्राइवेट और हैवी वेट पे हम फोकस कर रहे हैं? क्योंकि सीपीएसई सेक्टर एज अ होल, पीएसयू बास्केट अगर हम देखें
तो अब उसमें मोमेंटम फिजल आउट हो चुका है, और जो FIIs का बाइंग आया है उसके कारण जो है हैवी वेट्स पे ज्यादा फोकस रहेगा. सो दैट इज व्हाई फोकस इज मोर ऑन heavy weight private banking counters in Bank Nifty as Bank Nifty is outperforming. पिछले 5 सेशन में हमने करीबन 12% शॉर्ट कवरिंग मूव देखा है बैंक निफ्टी में, यानी कि जो शॉर्ट्स थे वो कवर हुए हैं. तो यू नो इफ यू गाइस रिमेम्बर, तो मैंने बोला था कि कहीं भी आप देखोगे इफ द स्टॉक और इंडेक्स इज मूविंग हायर, वहां पे लोग अगर फ्रेश बाइंग करते हैं तो वहां पे लॉन्ग बिल्डअप होता है. जहाँ फ्रेश बाइंग हो रही है वहां ग्रेजुअल अपमूव होता है, बेस हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट होता है, जैसे कि हो रहा है निफ्टी में. बट व्हेन देयर इज अ शॉर्ट कवरिंग मूव, यानी कि जो लोग शॉर्ट कर रखे थे, जो लोग सेल कर रखे थे, वो अब अपना पोजीशंस कवर कर रहे हैं. ऐसे में क्या होता है, बहुत ही क्विक मूव आता है, which we witnessed in Bank Nifty this week. So definitely short covering move is quicker than long build up move, and that is why we are experiencing good momentum which will continue here. So next 54,000 के लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, और 52,750 के एक सपोर्ट के साथ. Now, of course, today is Friday. It calls for the Sensex expiry. And last Friday हमने बहुत ही volatile swings देखे थे, और हम होप कर रहे हैं कि आज भी ऐसे swings हमें मिले ताकि हम कैप्चर कर पाए. But of course, we'll have to be with the trend. थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिख रहा है हायर जोन्स पे. कल के लेवल्स पे भी हमने देखा, कल के सेशन में बैंक निफ्टी टच्ड अ फ्रेश ऑल टाइम हाई ऑफ 83,773 मार्क्स. उसके बाद आज हम ओपनिंग तो पॉजिटिव हुए हैं 83,600 के ऊपर, बट वहां से राउंड अबाउट 500 पॉइंट्स हमने डिप देखा है फ्रॉम ओपनिंग लेवल्स. सो समवेयर कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट फॉर द डे. बट जैसा भी स्टांस होगा हम ऑफ कोर्स कॉल या पुट में जाएंगे. लेट्स लेट द मार्केट स्टेबलाइज अ लिटिल मोर, उसके बाद हम एक क्लियर स्टांस ले पाएंगे. एंड फॉर द एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर कुछ स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आई टेल यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन टुडे. अगर प्ले आउट करना है सेंसेक्स को, तो हम सिमिलरली निफ्टी के जैसे ही प्ले आउट कर सकते हैं. We have to keep in mind 83,000 as an important zone over here. 83,000 आपका लक्ष्मण रेखा बनते हुए दिखेगा. इट्स अ मेक और ब्रेक जोन. अगर इसके ऊपर जब तक होल्ड करता है तब तक हम पॉजिटिव टू कंसोलिडेटेड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं. पर अगर अगर 83,000 टूटता है तो हम थोड़ी और वीकनेस इसमें देखेंगे. अब लाइफ हाइस पे है तो ये वीकनेस को हम करेक्शन की तरह ना देखें. इट्स सिंपली प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन, और सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही ज्यादा सारे ही काउंटर्स में देखने को मिल रहा है. सो वील हैव टू बी स्मार्ट एंड वील हैव टू बी विद द सेक्टर्स. क्विकली मैं 2-3 मिनट सेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ जो अच्छा लग रहा है. देन आई जस्ट टेक अप ऑल ऑफ योर स्टॉक क्वेरीज. राइट, कल की एक अपडेट में हमने कल एक टाइटन दिया था स्टॉक, and the stock opened positive, but it's given up most of its opening gains. And तो हम देख रहे हैं कि वही है अभी फ्लैट के आसपास. So it's near about the same levels. तो आपने अगर सुबह ओपनिंग पे प्रॉफिट बुक किया है तो गुड, बट नहीं तो हम होल्ड कर सकते हैं with a support of 3740 levels. This will be your stop loss which you can trail. राइट, तो टाइटन पे ये व्यू है. बाकी आज के सेक्टर्स या स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करें तो टुडे मेटल्स आर इन फोकस. आप JSW स्टील देख लो, या NMDC देख लो, या फिर नैल्को देख लो. ऑल दी स्टॉक्स आर विटनेसिंग good buying interest here. I'll just quickly go through the chart of Nalco. यहाँ पे स्टॉक एक 2 दिन के हॉल्ट के बाद वापस अब अपनी गति बढ़ा रहा है. The good part over here is that the stock had surpassed its previous hurdle zone. एक double bottom formation sort of बना है स्टॉक में, और एक अच्छे यहाँ पे moves भी देखने को मिल रहे हैं. So 183 can be your support for the day for an upside move towards 186, 187 zones. तो ये आप देख सकते हो.
याद रखिए गाइस, मेटल स्टॉक्स में क्या होता है, these stocks tend to be volatile. तो यहाँ पे आप अगर JSW स्टील या टाटा स्टील या फॉर दैट मैटर मेटल के रिलेटेड काउंटर्स भी है, ऑयल एंड गैस के, एनर्जी के, कोल इंडिया हो गया या वगैरह, तो उसमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर्स होते हैं, इनको अभी भी कहीं ना कहीं सिक्लिकल माना जाता है टू सम एक्सटेंट। तो काफी ट्रेड करो, because you don't want to wipe away your gains, right? ओके, एक छोटा अपडेट है शुगर के ऊपर। हम देख रहे हैं कि शुगर स्टॉक्स भी काफी मोमेंटम है नाउ। बाय हमने देखा है, जस्ट मिनट, yeah, I'll just, I can't load my chart, but anyway, शुगर स्टॉक्स में क्या हुआ कि इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस राइज हुए हैं 4 मंथ्स हाई के लेवल्स पे। तो जब ये राइज हुआ है, ऑब्वियसली डोमेस्टिकली आल्सो देयर विल बी अ आफ्टर इफेक्ट ऑफ दिस, तो इसलिए आज हम देख रहे हैं बलरामपुर चीन जैसे स्टॉक्स थोड़े बहुत अप है। बट अगेन शुगर इज आल्सो हाईली वॉलेटाइल, तो उसमें हम अगर ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे ही रखे, ओवरनाइट नहीं रखे, ये मेरी राय रहेगी। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू टेक हाई रिस्क यू कैन take it, but this will be what I would suggest. And metal prices आज क्यों surge में है, because there has been a rise in the base metal prices because of mortgage rate cuts expectations है चाइना में, और इस कारण कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स आज मोमेंटम में है। डॉलर इंडेक्स जो है वो 14 मंथ लो पे आ चुका है, तो ये भी एक इंडस्ट्रियल स्टॉक्स को काफी अच्छा बेनिफिट देगा, एंड वन ऑफ देम इज मेटल स्पेस। एडिशनली ऑफ कोर्स हमने एक अच्छे मॉनसून देखे हैं, तो कुछ ना कुछ वो स्टॉक्स भी हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स आर बैक इन एक्शन। आईटी स्टॉक्स में क्योंकि मुझे पता है काफी लोगों का क्वेश्चन भी रहेगा, ये आईटी स्टॉक्स अभी काफी वॉलेटाइल हो रखे हैं, चाहे आप डिक्सन की बात करो चाहे बीसॉफ्ट की बात करो। एक मोमेंटम, एक अच्छे प्राइसेस पे आके हम देख रहे हैं वापस स्टॉक जो है वो गिव अप होते हुए दिख रहा है। सो वील वेट एंड वॉच हियर। अभी भी आईटी हम देखो, अगर डिक्सन की अगर स्पेसिफिकली बात करो, दिस यूज्ड टू बी अ प्रीवियस रेजिस्टेंस एंड नाउ this level is acting as a support zone, if you can see my chart. So this is an important level to watch out for Dixon, और काफी लोगों ने Dixon में positions भी लिया हुआ है, so that is also a view here that if it holds these levels it is good to go, you can keep holding. So this will be important to watch out, right? Okay, I think काफी सेक्टर्स और स्टॉक्स में कवर कर चुका है, डिस्कस कर लिया है, बट नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू टेक अ फ्यू क्वेरीज। ओके, आई कैन सी Avinash, you can just do the queries, you can see, but एक सोलापुर जे से एक क्वेश्चन है संवर्धन मदरसन पे, so I just want to answer that because that stock is looking quite positive, right? मदरसन ये जो स्टॉक है, अगर आप पोजिशनली लिए हुए हो, द स्टॉक इज वेरी वेल प्लेस्ड। वीकली बेसिस पे इसका एक चैनल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एंड टिल द टाइम इट होल्ड्स अबव 200 देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस स्टॉक। बट अगर आपने ऑप्शंस में ट्रेड किया हुआ है, सो एडवाइस वुड बी that please go for a bull call spread so that your risk is limited. आप ज़्यादा exposure नहीं ले रहे हो, and anyway it's we are entering into the last week of the expiry, the last week of the month, तो volatility बहुत रहेगी इस हफ्ते, time value थोड़ा कम रहेगा, so you have to trade accordingly. Now yeah, over to you, Avinash. So we have already covered a lot of things, शिवांगी मैम। आपने तो सेक्टर्स भी कवर कर लिया, मार्केट में तेजी है मंदी वो भी बता दिया, काफी सारे स्टॉक्स भी बता दिया आपने। सो ऑल इन ऑल काफी बढ़िया था अभी तक। So before we move to the stock queries,
as people are here for the trade. So do we have any trade setup as of now? See, if I go to Nifty or Sensex today, हम देख रहे हैं कि markets are still stabilizing right now. If I just go to the shorter time frame charts also, अभी तक कोई clear trend या setup नहीं बनते हुए दिख रहा है. It's consolidating. तो जब तक अगर markets अगर 25,500 के ऊपर अगर hold करता है तो यहाँ पे हम बिल्कुल call side में buy कर सकते हैं. So this will be your cue to buy for Nifty. And if you look at Sensex, I'll just quickly tell you the strike as well, Sensex ka. Okay, I'm just loading my option chain for Sensex. Till that time, okay. Yes. So Sensex का भी हम काफी cues ले सकते हैं Nifty से. And कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक range bound movement है. So till the time Sensex crosses 83,500 levels, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा 420 के ऊपर नहीं टिक पाया था. So this is 83,500 levels का एक आप देख सकते हो cluster zones यहाँ पे बना हुआ है. तो till the time it crosses this level, हम वेट करेंगे. But if this manages to crosses तो 83,800 के कॉल को हम रडार पे रख सकते हैं. So this is one option. Okay, so what we can do is एक bull call spread हम बिठा सकते हैं for Sensex because we expecting positive move, but थोड़ा range bound move हम expect कर रहे हैं. So I'm seeing कि bull call spread एक अच्छे ratio पे अभी बैठ रहा है. The risk reward ratio is quite nice. So one can go for buying 83,800 call and selling 84,000 call. ये आपको 30 से 35 point के costing में बैठेगा. And the maximum reward that you can expect here is 165 points. So 83,800 call अगर आप buy करते हो, 84,000 के call को sell करते हो, you've made a bull call spread position and the costing is 35 points in this case, and maximum reward जो है 165 points का बैठ सकता है. So this is the bull call spread strategy for the expiry day point of view. प्रशांत ने उसको पिन भी कर दिया है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो. So I'll just repeat again, Shivangi ma'am. So we have initiated a bull call spread. जो हमारा buy है 83,000 का call हम लोग buy करेंगे और 84,000 का call sell करेंगे, right? जी बिल्कुल. हाँ, and the combined premium will be of around 35 points and the maximum reward हमें जो मिलेगा 165, right? Correct. Great. So this is a bull call spread that we can play. क्यों हम strategy कर रहे हैं is because morning के trades में हम देख सकते हैं कि when you do a strategy, आप आपके जो profits है वो 1-2 घंटे में ही आप book कर सकते हो comfortably. आपको option trades का डर भी नहीं रहेगा to completely watch it and constantly watch it. तो ये आप कर सकते हो. Now 25,500 के ऊपर index hold करते हुए दिख रहा है. So you can also look at a Nifty call option. But of course हम Sensex की call option को भी देखेंगे. So Just Shivangi ma'am, you're saying something. yes, so Sensex one can go for 84,000 83,900 के कॉल को देख सकते हो. थोड़ा कूल ऑफ यहाँ पे आए तो आप इसको एंटर कर सकते हो. But since you've already done a spread, I think you should hold on to that. और जो buying के strikes और वो रहेंगे सब आपको आफ्टरनून सेशन में भी एक अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा उसमें. But markets are holding at higher zones and it is quite positive, so one can go for the full buy side. अब conviction आते हुए दिख रहा है as markets are stabilized now after 30-40 minutes of opening zone. आज तो हमारे clients भी पूछ लिए मैडम हमारे queries ले लो, stock queries. So yeah, definitely guys, we will take your queries. So Shivangi ma'am, before we move, do we have any intraday trade for today? Okay, so intraday I'll just
check for a few stocks. So काफी हमने देखा कि कल के एक गिव अप मोड जो आ गया था इंडेक्स, उसके बाद काफी स्टॉक्स आज कंफर्टेबल पोजीशंस पे आए हैं. आप हमेशा, मुझे काफी लोग यही बोलते रहते हैं कि करेक्शन कब आएगा, जब हम एंटर करेंगे, यू नो. सो एवरीवन इज आल्सो वेटिंग फॉर अ good correction, although there is no immediate correction that we are expecting. Okay, IEX is one stock which is looking very positive for intraday. तो IEX को आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा शानदार सेटअप है. Stock has been trading upward, supports are shifting higher from the last 18 sessions here. So I'll just quickly show you the charts as well. IEX is what I'm looking at. This is the daily frame. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हायर जोन से डिप भी आया, तो इट्स अ कंफर्टेबल एंट्री पॉइंट हियर. So IEX is what we are looking at for 235 levels. तो 235 के टारगेट्स के लिए आप IEX देख सकते हो, right? And the stop loss will be near 225. So 225 के stop loss के साथ 235 के levels के लिए आप IEX को देख सकते हो. There is selective buying in these sectors. Across sectors अभी market ऐसा हो रखा है कि एक sector में भी काफी selection हो रहा है. Like अगर आप auto space में देखो, so Tata Motors and all are not doing quite well, but Bajaj Auto is holding on to higher zones. कुछ electric stocks है, EV stocks है, जो काफी higher zones पे hold कर रहे हैं. So within sector also, I think it's smart to be with the strength names. So we have already covered a lot of things, Shivangi ma'am, and आपने तो आज front foot पे आपने ही पूरा session lead किया है. So before we wrap up the session, we should take a lot of queries, not lot, but we'll cover a few queries. So what is your view on Bajaj Housing Finance? Is it a right time to buy at the current price? Okay, so of course this has been the IPO of the year, I must say. काफी charts तो नहीं है हमारे पास क्योंकि recent listing हुई है, but if you talk about the story of this stock, growth story अच्छा है, fundamentally it is coming from a good group of stocks. तो overall आपका अगर लिया हुआ है तो बिल्कुल आप बने रह सकते हो, and if you've booked your listing gains, then I think you can again see this stock at good declines. पिछले 2 सालों में कुछ अच्छे आईपीओज आए हैं, काफी अच्छे आईपीओज आए हैं. आप जोमेटो को देख लो, जो थोड़े टाइम पहले आया था, या फिर आप इस स्टॉक को देख लो, चाहे आप जियो फाइनेंस को देख लो. So all these IPOs I feel are the best picks right now. And next heavyweights जो strength वाले बनने के candidates हैं, so बिल्कुल आप hold कर सकते हो for long term. Bharti Airtel view. So there is some sort of corporate action that has happened in the other related space stocks, but Bharti Airtel is very strong. And हमने देखा है कि this stock, this is the monthly chart of Bharti Airtel. March 2023 यानी कि last year March से हमने देखा है कि consistently एक अप रहा है और follow up यहाँ पे on the daily basis also it's consolidated after 4-5 sessions, so which makes it a good momentum stock right now. तो आराम से इसको 1750 के levels हम expect कर सकते हैं भारती एयरटेल में, which I mean it's already trading at a record high levels, but यहाँ पे हम और momentum और strength add होते हुए देख रहे हैं. Okay, so ma'am, what is your view on Zomato? जिसे हम लोग देख पा रहे हैं आज भी 3.5% के आसपास से ऊपर है. तो just the queries we have from our client, ये मेरा भी एक query है, please address this ma'am. Absolutely. देखिए Zomato एक stock की तो हम बात करेंगे, but I think now it's become a lifestyle for us. जो shift हुआ है in the last 2 years, I think everybody has become very I can say कि आदत हो गई है हमें Zomato की. तो डेफिनेटली अगर आप इतना यूज करते हुए दिख रहे हो ऑन अ डेली बेसिस, तो आप देख सकते हो स्टॉक का जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफी पॉजिटिव है. लाइक आई सेड, Zomato हैज बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर एंड बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में मस्ट हैव्स है.
तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको बिल्कुल रखना है. एट एनी स्मॉल डिक्लाइन यू कैन एड अप दीज स्टॉक्स. ओवरऑल स्टोरी इज क्वाइट पॉजिटिव एंड टेक्निकली भी अगर हम बात करें तो काफी पॉजिटिव लग रहा है इन लेवल्स पे भी. सो यू कैन होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक फॉर नेक्स्ट 300 इमीडिएटली. और पोजिशनली अगर आप बात करो तो 500 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे जोमैटो में. Great. Your view on Escort? Okay. So if you look at Escorts, beg your pardon. So Escorts में वीकली बेसिस का एक जो कंजेक्चर जोन था उसका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है. सो बट आई बिलीव यहाँ पे एस्कॉर्ट्स में स्ट्रेंथ तभी बनेगा जब ये 4000 के ऊपर होल्ड करेगा. तो आप एक 100 पॉइंट्स के मूवमेंट का वेट कर लो. आई थिंक इट विल बी सेफ टू वेट फॉर 100 पॉइंट मूवमेंट टू द स्टॉक, ताकि हम मोमेंटम में एंटर करें और एक कन्विक्शन के साथ भी एंटर करें. तो थोड़ा और आई थिंक आई वुड सजेस्ट टू वेट वॉच इन दिस. बाकी आप अगर ऑटो स्पेस में जाना ही चाहते हो, सॉरी टू कट यू, तो बजाज ऑटो को देख लो आप, व्हिच इज अल्टरनेटिवली वेरी पॉजिटिव एंड होल्डिंग ऑन. तो ये एक ऑटो स्पेस में स्टॉक है. इनफैक्ट इसके जो डिलीवरी वॉल्यूम्स हैं पिछले 2 हफ्ते से काफी अच्छे ऐड हुए हैं. सो वन कैन लुक फॉर दिस स्टॉक इफ एट ऑल अगर ऑटो के साथ जाना है. Edelweiss? आई थिंक कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स जो है और आप उसको एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स देख लो या कुछ ब्रोकिंग कंपनीज के स्टॉक्स देख लो, काफी पॉजिटिव है. ऑफ कोर्स डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर दैट वी कम फ्रॉम अ ब्रोकिंग हाउस, बट stocks are looking very positive. Great. Your view on Larsen and Toubro? So this stock has been moving in a very narrow band from the last आप देख सकते हो 6 महीने से उसी बैंड पे it's moved. So I don't believe यहाँ पे एक एक सपोर्ट अच्छा है, but the stock is respecting its trend line zone. तो आप इसको देख सकते हो for a gradual move but not like a very quick move. Overall stock is nice, but it will take time. Great. So we'll take, Shivangi ma'am, couple of more queries, then we'll wrap up the session. Sure. What is your view on IRFC? Should I still hold it or sell it? IRFC, I think पिछले 3-4 हफ्तों से every day ये stock का query आया है, and I've been quite vocal about it also कि रेलवे स्टॉक्स में हम नहीं देख रहे हैं कोई जान, तो आप प्लीज एग्जिट कर लो. एंड आई थिंक आई हैव बीन टेलिंग दिस फ्रॉम द लास्ट 3 consecutive वीक्स कि आप एग्जिट कर सकते हो रेलवे स्टॉक्स को. ओके. एनटीपीसी? एनटीपीसी में कल एक अच्छा पुल बैक मूव देखने को मिला था, बट टुडे इज अगेन गिवन अप. Like I said, NTPC and stocks like this, they move. एक दिन ग्रीन में होता है, दूसरे दिन रेड में होता है, फिर एक दिन ग्रीन एक दिन रेड. इसका यही पैटर्न रहा है ऑलमोस्ट. काफी वॉलेटाइल भी रहता है. तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हो तो इट्स ओके. पोर्टफोलियो स्टॉक ठीक है, बट ट्रेडिंग के लिए यू कैन आई थिंक बुक प्रॉफिट्स नाउ. ओके. योर व्यू ऑन बीएचईएल? बीएचईएल इज नेगेटिव एंड इसमें थोड़ी और वीकनेस देखने को मिलेगी. Great. So we'll take, Shivangi, 2 more queries, then we'll sum up the session. Your view on Olectra Green Tech? So all the EV space या फिर हम बैटरी स्पेस स्टॉक्स उसमें एक अच्छा मोमेंटम है, but I think this is another stock which is Olectra Green Tech. थोड़ा और इसमें पेन देखने को मिल सकता है, till the time it doesn't surpass 1750 levels. यहाँ पे वापस strength regain करना मुश्किल है. Great. So this will be the last query, guys. Shivangi ma'am, SBI card bought at 955 levels. So should I hold and or sell this stock? SBI card, in fact, financial space के जो स्टॉक्स है उसमें काफी अच्छा मोमेंटम है पिछले 2 हफ्तों से.
and SBI card is of course one of them, which is revived after months of consolidation. तो आज थोड़ा बहुत dip जरूर है, but overall stock is very positive. कल के एक low 777 को आप stop loss बना लो और hold करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. Great. So and I know there are a lot of queries जो हमने cover नहीं किया है, but due to time constraint we try to cover all the queries, but what you can do is please post your queries on Stockholm. Our experts will be more than happy to answer your queries. And yeah, हमने आज के दिन में 2 trade दिया है, एक तो bull call spread दिया है and one was intraday for on IEX. So let's hope guys कि हमारा profitable session रहे and whatever the feedback will be, we will share you in the afternoon session. So guys, make sure. I'll just quickly, sorry to cut you, I'll just quickly give an update on the bull call spread जो हमने दिया था. So we had given it at a costing of 35 points, right? और अब वो 120 पे चल रहा है, तो obviously आपके अच्छे profits बने यहाँ पे around 85-90 points के. So आप ये बुक कर सकते हो या फिर आप ट्रेल भी कर सकते हो. But yes, good profits have been made in this strategy right now in just 15 minutes. तो बिल्कुल आप ये 90 points को घर लेके जा सकते हो, 90 points के profit को. यूए ने शिवांगी मैम को निफ्टी क्वीन कहा जाता है और मैम ने सेंसेक्स में भी हमें प्रॉफिट दे दिया. सो दैट्स रियली अ ग्रेट न्यूज़ गाइस. हमें ऑलरेडी ये कपल ऑफ मिनट्स के अंदर ही 80 पॉइंट्स का एक मोमेंटम मिल गया. सो ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट प्रॉफिटेबल सेशन. सो थैंक यू सो मच शिवांगी मैम for this great session, and we are also hoping कि intraday trade भी हमारा profitable रहे. And guys, also make sure we have a Sensex expiry at 2:30 p.m. and it will be none other than Hosheba Sensex King. So guys, make sure you join our session. So thank you guys for joining. Thank you, Shivangi ma'am.